Hi guys, welcome back to my channel. So from today we are going to continue a series based on Shakespeare's dramas and all. So today we will be discussing about Romeo and Juliet, which is a very beautiful romantic tragedy actually. So I hope you will like it. Stay tuned and enjoy. So, Romeo and Juliet. It is based on Italian tale which was once translated in prose and another in verse. पहले इसको प्रोज में ट्रांसलेट किया गया, उसके बाद इसको वर्स में ट्रांसलेट किया गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्स एंड प्रोज? वर्स का मतलब होता है पोएट्री, पोयम, और प्रोज का मतलब होता है story. Okay. So in verse, the title given to Romeo and Juliet was Tragical History of Romeo and Juliet by Arthur Brooke in 1562. While in prose, the title was given to Romeo and Juliet as Palace of Pleasure by William Painter, and it was published in 1567. Shakespeare performed Romeo and Juliet on stage in 1595. Well, so now let us talk about the plot and all. So here we will be discussing about the character sketches. First one is Romeo, who is the protagonist of this play or drama. He belongs to the Montague family. ठीक है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है हीरो. जो किसी भी कहानी या किसी भी प्ले या नॉवेल का हीरो जो होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं. एंड इन दिस स्टोरी ही बिलोंग्स टू अ मोंटेग फैमिली. मोंटेग फैमिली से वो बिलोंग करता है. देन देयर इज़ द हीरोइन हु इज़ जूलियट. सो जूलियट जो है शी बिलोंग्स टू द कैपुलेट फैमिली. जूलियट कैपुलेट फैमिली से बिलोंग करती है. Then there is Mercutio, who is a friend of Romeo, and then there is one more friend of Romeo named as Benvolio. So basically, Mercutio and Benvolio are the two very good friends of Romeo. Then there is Balthazar, who is a servant of Romeo. Then there is Tybalt, who is a cousin of Juliet. Then there is a nurse who is a mother figure to Juliet. Juliet के वो बहुत ही क्लोज है एंड जूलियट उसको अपनी मदर की तरह मानती है. एंड देन फाइनली there is a फ्रायर लॉरेंस. फ्रायर लॉरेंस इज़ द फादर फिगर टू रोमियो. ठीक है, रोमियो जो है फ्रायर लॉरेंस को अपने फादर की तरह रिस्पेक्ट देता है, मानता है. वेल, द सेटिंग ऑफ द प्ले इज़ बेस्ड इन वेरोना. एक सिटी है वेरोना विच इज़ इन इटली. सो यहाँ पर ही पूरा सेटिंग है, मतलब इसका पूरी कहानी जो इर्द गिर्द जिस शहर की घूम रही है वो है वेरोना. ठीक है. सो द प्रिंस ऑफ वेरोना हैज़ डिक्लेयर्ड दैट नाउ इफ दीज टू फैमिलीज विल फाइट इन पब्लिक दे विल बी पनिश्ड टू डेथ. ठीक है, जो प्रिंस हैं वेरोना के वो अक्सर ही देखते रहते हैं, उनको अक्सर ही सुनने मिलता है कि दोनों फैमिलीज लड़ी, अब लड़ी तब लड़ी. सो दैट इज़ वाई ही हैज़ नॉट डिक्लेयर दैट नाउ इफ दीज टू फैमिलीज विल फाइट दे विल बी punished to death. Okay, now what happens is the play itself opens up with a big fight between these two families. प्ले की शुरुआत ही इस बात से होती है कि इन दोनों फैमिलीज़ के बीच में हो गया है झगड़ा, लड़ाई. एंड देन देयर इज़ रोमियो हु इज़ वेरी वेरी अपसेट बिकॉज ही हैड अ गर्लफ्रेंड नेम रोजालिन हु हैज़ नाउ डिसाइडेड टू बिकम अ नन. ठीक है, रोमियो की एक गर्लफ्रेंड होती है और उसने नाम है उसका रोजालिन एंड शी हैज़ नॉट डिसाइडेड टू बिकम अ नन. नन मीन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ चैसिटी वेयर शी इज़ नॉट रेडी टू मैरी एनी बडी हर एंटायर लाइफ, नॉट इवन रोमियो. सो ही इज़ वेरी वेरी सैड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, right? And then there is his best friend, or you can say Benvolio, who is trying to cheer him up and he is trying to make him understand that whatever this all is going on, it will pass on. Okay, just be relaxed, अपना ध्यान रखो, ये सब क्या लगा रखा है, cheered up रहो. ठीक है, क्या हो गया, जो हो गया सो अच्छा हो गया. You know, he is trying to cheer up जैसे friends करते हैं. ठीक है. Then what happens is few moments later Romeo is accidentally invited to the party which is going on in the family of Capulets. ठीक है, रोमियो वहाँ पर बाय मिस्टेक इन्वाइट हो जाता है एंड ना ही रोमियो की फैमिली को पता है और ना ही ये कैपुलेट्स जानते हैं दैट वी हैव इन्वाइटेड द एनिमी इन आवर होम. Okay, so now Romeo reaches there to the family of Capulets where the party is going on with both of his friends Mercutio and Benvolio. Okay, and few moments later, after spending some time there, he falls in love with Juliet. Okay,
So here you can see that few moments earlier he was crying for his girlfriend Rosalind, and few moments later now he has fallen in love with Juliet. So what kind of man? Well, whatever happens for a reason. So here Juliet, after some time, Juliet also falls in love with Romeo, and then happens the balcony scene where Romeo comes to the balcony of Juliet, where she's already standing, and then there they confess their feelings for each other. They tell each other that I love you and all. Okay. Now the only thing that is disturbing them is that the thought of how to marry each other, because they are very scared, because their families are not going to allow them to marry. So that is why they decide to marry secretly. And Friar Lawrence, who is the father figure to Romeo, he says that okay, I'll take care of your secret marriage. I'll let nobody know anything about your marriage. Okay. Now in the wedding, in the secret wedding, her nurse, I mean Juliet's nurse, and Balthazar, who is the servant of Romeo, they become the two witnesses of the wedding, because witness गवाह की जरूरत पड़ती है दोनों ही साइड से. So they are ready to witness the wedding. Now after the wedding happens happily, Romeo is now going to meet both of his friends Mercutio and Benvolio very happily. He's very happy, he's in very cheerful mood, and he's going to meet both of his friends Mercutio and Benvolio. But on the way, the cousin of Juliet, named as Tybalt, he crosses the path and starts quarreling with Romeo. ठीक है, टाइबल्ट जो है वो रास्ते में मिल जाता है रोमियो को, और उससे बहस हो जाती है उन लोगों की वहाँ पर. ठीक है. After some times of that quarreling and all, Mercutio, the friend of Romeo, decides to fight with Tybalt. And in the fighting, during the fighting, what happens is Mercutio is killed by him. Okay, Tybalt kills Mercutio. Now as a result, Romeo gets very angry and he kills Tybalt. ओके. सो रोमियो जो है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपने फ्रेंड की डेथ पे, और वो गुस्से में टाइबल्ट की जान ले लेता है. नाउ रोमियो अब बहुत ही ज़्यादा डर गया है, बिकॉज प्रिंस हैड ऑलरेडी डिक्लेयर्ड दैट इफ़ नाउ दिस फैमिलीज विल फाइट दे विल बी पनिश्ड टू डेथ. एंड just because इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, a man of the Capulet family is killed, so obviously there is going to be a huge fight between these two families. So now Romeo is very very scared and he's full of fear that what is going to happen now. So Benvolio is trying to control him, like डोंट बी फुल ऑफ फियर, जस्ट सब ठीक हो जाएगा, ऐसा समझाते नहीं है. ठीक है. सो बेनवोलियो इज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज फियर. ओके. सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इज रोमियो goes to Friar Lawrence and hides himself in his cell. उनके घर में अपने आप को छुपा लेता है. Where Friar Lawrence says that Romeo, you have been banished from Verona. तुमको प्रिंस ने बैनिश कर दिया है वेरोना से, और कहा है कि मतलब तुम यहाँ से निकल जाओ. And he has also declared that if you will be seen inside any time inside the boundary of Verona, you will be sentenced to death or you will be killed. ठीक है. तो वहाँ पे फ्रायर लॉरेंस बताते हैं कि तुमको बैनिश कर दिया गया है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निकाल दिया गया है वेरोना से, और तुम्हें अगर वेरोना में कहीं पर भी देखा गया तो तुम्हें तुरंत मार दिया जाएगा जान से. ठीक है. सो फ्रायर लॉरेंस सजेस्ट रोमियो दैट टुनाइट you just spend time with जूलियट एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट लीव फॉर मैंटुआ. ठीक है. तो फ्रायर लॉरेंस जो हैं वो रोमियो को समझाते हैं कि आज की रात तुम जूलियट के साथ स्पेंड कर दो और नेक्स्ट मॉर्निंग तुम मैंटुआ के लिए निकल जाना. एंड मीन वाइल आई विल ट्राई टू सेटल द मैटर बिटवीन बोथ द फैमिलीज सो दैट यू कैन रिटर्न होम लेटर. ठीक है. और वो बोलते हैं कि फ्रायर लॉरेंस कहते हैं कि तुम अभी चले जाओ जूलियट से मिलने, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैंटुआ चले जाना. उस बीच में मैं क्या करूँगा, दोनों ही फैमिलीज़ को सेटल करने का ट्राई करूँगा कि कुछ गड़बड़ ना हो, मतलब ऐसा बहुत बड़ा झगड़ा ना हो. ठीक है. नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़, अब रोमियो उससे मिलके जा चुका है, मैंटुआ निकल गया है.
जूलियट की मदर आती हैं जूलियट के पास एंड शी इन्फॉर्म्स हर दैट शी विल बी मैरिंग अ मैन नेम्ड पैरिस, कि तुम्हें पैरिस नाम के एक आदमी से शादी करना पड़ेगा. एंड नाउ एज अ रिजल्ट इट वॉज ऑब्वियस दैट जूलियट विल रिफ्यूज, सो शी रिफ्यूजेज टू मैरी पैरिस बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी मैरिड. हाउ कैन शी मैरी समबडी एल्स नाउ? ओके, अगेन. सो her mother says that whatever the reason you are is there because you are refusing the proposal, I don't care, you have to marry Paris. Then she goes and all. Then the nurse, who is a mother figure to Juliet, she tries to make her understand that you have to marry Paris for such and such reason. मतलब उसको पेरिस से शादी करने के लिए उसकी नर्स भी बार बार बोलती है और फिर उसके बाद उसको मना लेती है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा. ठीक है. नाउ जूलियट इज़ वेरी sad, she is very angry also, and she is not ready to marry anybody. So as a result she goes to meet Friar Lawrence at his cell, and there she says to him that she would love to die than to marry somebody else. ओके, तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मैं मर जाना पसंद करूँगी उसके बदले. ठीक है. सो फ्रायर लॉरेंस गिव्स हर अ लिक्विड एंड आस्क हर टू ड्रिंक इट बिफोर अ नाइट ऑफ द वेडिंग, कि शादी की एक रात पहले तुम इसको पी लेना. ठीक है. द ड्रिंक विल मेक पीपल बिलीव दैट यू आर डेड बट इन रियल यू वुड बी अलाइव. ये तुम्हें सिर्फ ऐसा मूर्छित बेहोश जैसा कर देगा एंड एवरी अदर पीपल विल अंडरस्टैंड और दे विल कंक्लूड दैट यू आर डेड, और फिर उसके बाद क्या होगा, तुम्हें वो छोड़ देंगे. तो इस तरह से तुम्हारी शादी टूट जाएगी पैरिस के साथ. ओके, जबकि तुम तो जिंदा रहोगी. ऑन द अदर हैंड आई विल सेंड अ लेटर टू रोमियो टेलिंग दैट नाउ द फैमिली इशू विल बी सेटल्ड एंड ही कुड रिटर्न होम. ठीक है. और बीच में मैं उसी पल क्या करूँगा कि मैं रोमियो के पास एक लेटर भेज दूंगा जिसमें सच एंड सच सारी सच्चाई लिखी रहेगी कि हम लोग क्या फेक करने वाले हैं या नाटक करने वाले हैं, और उसी बीच रोमियो को मैं बुला लूँगा और तब तक मैं फैमिली इशू को सेटल भी कर दूंगा. बट एवरीथिंग हैपन्स डिफरेंटली, मतलब कि सब कुछ गलत हो जाता है, सब उल्टा पुल्टा हो जाता है. एंड नाउ व्हाट उल्टा पुल्टा हैपन्स इज दैट जूलियट ड्रिंक्स the liquid a night before her wedding and everybody thinks that she is dead. चलो यहाँ तक तो ठीक था. Everybody thinks that she is dead. But meanwhile, Romeo's servant Balthazar also believes that Juliet is dead. जो उसका Balthazar जो सर्वेंट था उसको भी यही लगता है कि जूलियट जो है वो निकल ली, भाई मर गई. तो वो क्या होता है कि he runs and goes very fast to inform Romeo. वो रोमियो को इन्फॉर्म करने के लिए जाता है दैट योर वाइफ इज डेड, शी हैज़ ड्रैंक पॉइजन. वाइल जो फ्रायर लॉरेंस जो लेटर भेजने वाले थे रोमियो के पास, द लेटर हैड ऑलरेडी फेल्ड टू रीच हिम बिकॉज रास्ते में जिसने उन्होंने लेटर भेजा था उसको रास्ते में किसी रीज़न से रुकना पड़ता है, और थोड़ी सी देर होने की वजह से क्या होता है कि बैल्थाज़र पहले पहुंच जाता है रोमियो के पास. ठीक है. एंड वहाँ पर रोमियो गेट्स टू नो दैट वट एवर हैज़ हैपेंड एंड ही वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ द प्लान ऑफ फ्रायर लॉरेंस. नो, ही डजंट नो दैट दे आर ओनली एक्टिंग ऑफ बीइंग डेड. ठीक है. दैट जूलियट इज़ नॉट एक्चुअली डेड, शी इज़ अलाइव, बट रोमियो इज़ टोटली अनअवेयर ऑफ दिस ट्रूथ. सो ही बिलीव्स द वर्ड्स ऑफ Balthazar and he immediately rushes to the to buy a poison first of all, and then he rushes to the tomb of Juliet and he is very sad. And what happens next is few moments later, because he is in very deep grief, he's very sad, he's very emotional, so as a result he drinks the poison himself, that my wife is dead and then why should I be alive? So he drinks the poison. What happens next is, as soon as Juliet wakes up, okay, she finds that Romeo has drunk the poison and now he is dying. okay, और फिर क्या होता है कि रोमियो तुरंत उसकी डेथ भी हो जाती है and she is very sad. वो अपना मतलब अलग ही माहौल हो जाता है वहाँ पे. शी इज़ वेरी सैड इन वेरी डीप ग्रीफ एंड शी इज़ वेरी गिल्टी ऑफ वॉट एवर शी हैज़ डन. सो as a result she drinks the same poison that Romeo had brought with himself and thus she also dies.
Later what happens is the family, both the families, when they understand the basics that the fight between both of us had ended the life of our dear children, so they realize their mistakes and they reunite together. Okay, and they decide not to fight ever. Okay, so this was the story. And from the story of this drama, of this romantic tragedy, what we get to learn is that, first of all, that love is blind. Second is that though love is blind, but it is still stronger than hatred. Okay, so try to love each other, try to spread love instead of hatred, because your hatred can end the life of your near or dear ones. Okay, so I hope you enjoyed. Have a nice day, take care, stay tuned for the next drama.